Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Swedeep Academy. As you can see here, today we are going to discuss about the making of Germany and Italy, or otherwise we can say unification of Germany and unification of Italy. But before we start, let's first try to understand what was the political situation of France prior to the 1848 and what was the situation after 1848. जहाँकि आम लास्ट क्लास रे ऑलरेडी डिस्कस करिछे बट स्टिल पुनर्बार आम ए पार्ट रे ताकू टिके रिवाइज करिबा सो दैट कि वी कैन कनेक्ट इट विथ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटाली. सो लास्ट क्लास रे आम डिस्कस करथिले दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1848 और बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ड्यूरिंग 1848 monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries, and because of that monarchs after 1848 धीरे धीरे liberal nationalist revolutionaries मानकर ओपिनियन रे बा सेमानकर डिमांड रे एग्री हिथिले. So what was the situation prior to 1848? 1848 prior situation कौन थिला ना monarchs बा में कहि परिबा conservative order से माने liberal nationalist revolutionaries मानकर डिमांड सह एग्री नथिले, ओपोज करथले, एंड जो conservative order थिला जो conservative systems थिला से system रे बिलीव करथले. But after 1848 we can say somehow they were agreed to grant some concessions to the liberal nationalist revolutionaries. That we'll discuss in this part again. So let's see, as you can see the title, that is Can Army Be the Architect of a Nation? So with discussion you can understand the title of this, that is German unification. After 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservative for promoting state power and achieving political domination over the Europe. So again I am telling you, after 1848 कौन है ना यूरोप रे nationalism. Here nationalism means what? That is we can say large scale unity. यूरोप रे जो गोटे large scale unity देखा जाउथला आफ्टर 1848 ए जो लार्ज स्केल यूनिटी बाय जो नेशनलिज्म फीलिंग इमर्ज होतला दैट मूव अवे इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन. एज यू नो 1789 परठू ओके अप टू 1848 आमे ए चैप्टर भी डिस्कस करचे. That is idea of national unity. ये कहाँ सहित associate थिला ना, it was associated with the idea of liberalism. हमें पढ़िथिले liberal nationalism part रे पढ़िथिले. तो idea of nationalism बा हमें कहि परिबा idea of national unity between this period हमें कहिबा democratic ideas, democratic principles किछि ideal principles सह associate थिला. केते बेले ना between 1789 to 1848 or we can say before 1848. But after 1848 what happened ना वर्तमान आमे देखुचे that feeling of nationalism or you can say the nationalist sentiments बा आमे कहि परिबा national unity after 1848 gradually आमे देखिबा को पाउचे जे conservatives मानक सह से associated. It means before 1848 idea of national unity by Europe रे जो national unity देखा जाउतला that was because of the liberal nationalism. एंड आफ्टर 1848 जो आमे देखुचे नेशनल यूनिटी यूरोप रे दैट वाज बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. कहीं कि एभली कहीं कह जाइए ना बिकॉज पूर्व पार्ट में डिस्कस कले कि 1848 परे परे मोनार्क माने धीरे धीरे रियलाइज कले जे साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन को एंड करी हबो नाही जते दिन पर्यंत आमे लिबरल नेशनलिस्ट मानक सह एग्री न होइचे. एंड दैट्स व्हाई आफ्टर 1848 मोनार्क्स माने निजर स्टेट पावर को प्रमोट करिया पे निजर पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप एभली किछटा न्यून बा में कहि परिबा छोटो मनोवृत्ति को नहीं से माने कंजर्वेटिव्स माने
लिबराल नेशनलिस्ट मानक सह कौन होता एग्री होते आम एमती बुझीपर आफ्टर 1848 लिबराल नेशनलिस्ट मानक सह कंजर्वेटिव्स माने एथिपाई एग्री होते कौन भी इच्छा नाला कंजर्वेटिव्स मानकर जे लिबराल नेशनलिस्ट मानकर एम को फुलफिल करने बट देखुं जे लिबराल नेशनलिस्ट माने बहुत यूनाइट अच्छा एंड से चाहूँगी कि गोटे पर्टिकुलर टेरिटोरी रे बा गोटे पर्टिकुलर किंगडम बा गोटे पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग्स करथुवा लोकों को नहीं गोटे नेशन स्टेट गठन करिबा आ द्वारा कंजर्वेटिव्स ऑर्डर मानकर कौन फायदा हबो ना ए लिबराल नेशनलिस्ट मानक सह जदि मिसी से माने भी एमानक सह मिसी जदि नेशन गठन प्रक्रिया रे निजको भी योगदान करदेबे आ द्वारा कौन हबो ना से माने जो पॉलिटिकल डोमिनेशन बहुत पूर्वर एंजॉय करते बा जो एरिया गुड़िक से हाथ चली जाइथिला से सब पुनर्बार पाइबे एंड से स्टेट पावर बा तांकर पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप पुणी थे कौन होबार लगे ना बढ़िबार लगे एंड दैट्स व्हाई यू कैन से nationalist sentiments often mobilized by the conservative order after 1848 and this concept को हमें by idea को हमें बुझी परिबा by the taking the example of German unification and Italy unification. So this can be observed in the process of Germany and Italy which came to be unified as a nation state. As you can see this is Prussia, okay, se samara Germany, as you can see this is Prussia. So let's see केमती यूनिफिकेशन होता जर्मनी. As you have seen, nationalist feeling were widespread among the middle class German who in 1848 tried to unite the different region of the German Confederation. But से सक्सेस हो पार ना आम डिस्कस कर 1848 रे मिडल क्लास जर्मान्स माने चेष्टा करथिले पूरा होल जर्मन कन्फेडरेशन को यूनाइट करिबारे बट सक्सेस हो नथिले. एंड आफ्टर दैट आफ्टर द लिबराल इनिशिएटिव टू द नेशनल बिल्डिंग जेतेबेले लिबराल्स माने बा लिबराल्स मानकर जो चेष्टा थिला नेशन बिल्डिंग रो ताकू जेतेबेले रिप्रेस कर दिया गला ताकू जेतेबेले सप्रेस कर दिया गला कहार हेल्प रे हम पढ़िथिले मोनार्की मिलिटारी ओके लास्ट लैंड नोट्स तो आम कहि परिबा कंजर्वेटिव फोर्सेस को चेष्टा रे सेमानक द्वारा ए जो लिबराल्स मानकर नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव को 1848 रे somehow दबे दिया जाइथिला. बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड आमे कौन पढ़िले आफ्टर दैट कौन होइतिला ना लिबराल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज मानकू कंसेशन ग्रांट करिवारे को माने एग्री होइतिले ना कंजर्वेटिव्स. इट मीन्स वर्तमान बा जहाँ आम ये देखिले दैट इज वर्तमान कंजर्वेटिव फोर्सेस आगु को आसछन्ते नेशन बिल्डिंग करिवारे बा नेशन बिल्डिंग प्रोसेस रे बा नेशनल यूनिटी को बजाय रखिवारे वर्तमान कंजर्वेटिव सामना को आसछन्ते. नाउ दे आर लीडिंग द नेशन. Okay, as you can see here, from them on, that is after 1848, Prussia took on the leadership of the movement of national unification for national unification. So after 1848, you can see Prussia, जी की थिला गोटे मोनार्की सी मेजर रोल प्ले करछि सी लीडरशिप रोल प्ले करछि कहा को जर्मनी को यूनिफाई करिवारे. सो एज यू कैन सी हियर Otto Bismarck who was the chief minister of Prussia, he was the chief architect of this process and carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. जो प्रुसिया रो ब्यूरोक्रेट्स थिले प्रुसिया रो जो आर्मी थिला सेमान को सहायता रे इट मींस कंजर्वेटिव पावर रो हेल्प रे चीफ मिनिस्टर Otto Bismarck प्लानिंग कले जे केमती जर्मनी को यूनिफाई करा जाय परिबो. अराउंड 7 years वार्स वेर देयर 7 वर्ष धरी वार चलला कास तो ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस ओके एंड एंडेड विथ प्रुसियन विक्ट्री एंड इन दिस वे इट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ व्हाट ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. सो इन जनवरी 1871 प्रुसियन किंग विलियम I को प्रोक्लेम करा जाय एज द जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स रे गोटे सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई एंड प्रुसियन किंग विलियम I को डिक्लेयर कर दिया जाए कौन ना किंग ऑफ और द एम्परर ऑफ जर्मन. सो इन दिस वे जर्मनी कौन होता ना गोटे यूनिफाइड नेशन रे कन्वर्ट होता बा जर्मन एज ए नेशन स्टेट एस्टाब्लिश होता दैट इज इन 1871. सो रिमेम्बर हियर आम जो देखी पूर्वर कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन. येस जर्मन यूनिफिकेशन केस आम देखिले दैट इज कंजर्वेटिव ऑर्डर आर्मी रो साहाय्य ब्यूरोक्राट्स मानकर साहाय्य नेशन गठन करिवारे सक्षम होते. दैट्स व्हाई वी कैन से येस द आर्मी कैन बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन.
आर्मी भी गोटे नेशन रो चीफ आर्किटेक्ट हे पारिबो एज यू कैन सी ऑटो बिस्मार्क ब्यूरोक्राट्स मानकर हेल्प रे प्रुसियन आर्मी रो हेल्प रे जर्मनी को यूनिफाइड करिवार सक्षम होते दैट इज इन 1871 so on the bitterly cold morning 18 January 1871 an assembly comprising of princes of the German then representative of the army Prussian ministers chief minister Otto Bismarck is समस्तंकर प्रेजेंस रे 18 January 1871 रे पैलेस ऑफ वर्साइल्स रो हॉल ऑफ मिरर रे प्रोक्लेम करागला का को काइजर विलियम वन ऑफ प्रुसिया as the new German emperor. So in this way nation building process in Germany are demonstrated and dominance of Prussian state power. तो ये हमें कही परिबा जदि जर्मनी रा में नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस को हमें देखुचे देन ये कौन सो कुचे ना प्रुसिया रो स्टेट पावर बा जर्मन रो जो मोनार्क थिले से मोनार्क रो चेष्टा रे बा सेमानकर डोमिनेंस रो सह जर्मन एज ए नेशन स्टेट एस्टाब्लिश हला दैट इज इन 1871 सो हियर आमे कोन देखिले ना 1848 रो जो जर्मन को गठन करिवारे मेजर रोल प्ले करथले लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज दे वर फेल इन 1848 एंड 1848 रे समानकर विफलता परे वर्तमान यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी रे मेजर रोल प्ले को माने करछन्ती ना मोनार्क एंड दैट वाज द चेंज इन यूरोप आफ्टर 1814 सी ही थिला 1848 परवर्ती गोटे विराट बड़ चेंज ओके नेशनल यूनिफिकेशन प्रोसेस रे बा नेशनल यूनिटी को आउ लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज माने नुह मोनार्क्स माने वर्तमान लीड करछन्ती एंड मोनार्क माने ही की रोल प्ले करछन्ती नेशनल यूनिटी को बजाय रखिबार यस हमें यह कहि परिबा सेमानकर एम एहा नथिला जे गोटे डेमोक्रेटिक सोसाइटी को एस्टाब्लिश करिबा किछि कहि परिबा हमें छोटो चिंताधारा जेमती निजर पॉलिटिकल डोमिनेशन केमते बढ़ी परिबो केमती स्टेट पावर को से माने इंक्रीज करि परिबे किछि खराब एम थिला बट समहाउ दे वर एबल टू what na shape the idea of nation after 1848 same thing also happened in Italy as you can see here unification of Italy just like the Germany Italy too had a long history of political fragmentation as you can see here this is the map of Italy okay this is the map of Italy as you can see here so Italians were scattered over several dynasties as you can see ओके मिड सेंचुरी समय रे बा हम कहि परबे 18th सेंचुरी समय रे इटाली रे केते गुडाय किंगडम पूरा इटाली ऊपर कोन करथले शासन करथले इटाली भांगी भांगी थिला ओके सो ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटाली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स केमती ना से भितरु आमे केवल देखिबा सार्डिनिया पिडमोंट ओके दिस टू रीजन केवल सार्डिनिया पिडमोंट ही थिला रीजन जो एरिया ऊपर इटालियन प्रिंसली हाउस आमे कहि परिबा इटाली रो 17 जो माने थिले राजा से माने शासन करथले को एरिया ऊपर दैट इज सार्डिनिया पिडमोंट बट अदर देन दैट एज यू कैन सी नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर लोम्बार्डी एंड वेनेसिया का अंडर थिला ऑस्ट्रिया रो हैब्सबर्ग एम्पायर अंडर सेंटर आमे देखि पाउथले ओके पापल स्टेट पोप माने शासन करथले ओके मेंबर ऑफ द क्लर्जी they rule over the central part the southern region were under the domination of Bourbon king of Spain as you can see here kingdom of two Sicilies okay a region को Bourbon Spain रो Bourbon king a region ऊपर शासन करथले so in this way you can see Italy was scattered okay Italy पूरा भांगी की थिला बहुत कुडे छोटो छोटो एम्पायर रो गुटे पेचवर्क थिला just before the unification of Italy as you can see here that was the status of Italy prior to its unification but you can see here during the period of 1830s Giuseppe Mazzini को विषय में already discuss करते okay he had sought to put together coherent program for the unitary of Italian Republic but 1830 रा Giuseppe Mazzini को चेष्टा इटाली को unification करिबा कोन हेतला फेलर हेतला he had also formed secret societies like Young Italy okay आमे पढ़ीचे निजर गोल को डिसेमिनेट करिबा पई किसी सीक्रेट सोसाइटीज भी गिउसेप माजिनी चेष्टा करथिले फॉर्म करथिले द फेलर ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 1831 रे गिउसेप माजिनी चेष्टा करथिले एंड 1848 रे वी कैन से liberal revolutionaries of Italy they were also tried to unify the Italy during the period of 1848 but both completely कोन हे परथिला सक्षम हे पारि नथिला संपूर्ण फेल हेतिला
both 1831 ର ଚେଷ୍ଟା and 1848 ର. That's why after 1848 just like Germany ଆମେ ଇଟାଲୀ ରୁ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ. Now the responsibility, now the mental कहा उपकु चली जाउची ना सार्डिनिया पिडमोंट. ओके, एंड यू नो दैट सार्डिनिया पिडमोंट ही थिला रीजन जो रीजन टी इटाली रो प्रिंसली स्टेट्स को अंडर रे थिला बा हमें कहि परिबा इट वाज अंडर द विक्टर इमानुएल 2. ये केवल गोटे ही स्टेट थिला सार्डिनिया पिडमोंट जहा कि इटालियन स्टेट्स किंग विक्टर इमानुएल 2 को अंडर रे थिला. सो 1831 1848 रे इटाली यूनिफिकेशन प्रोसेस रे जो चेष्टा करा जाइथिला फेलर हवा पर आम कहीपर 1831 1848 रे लिबराल रिवोल्यूशनरीज माने ही चेष्टा करते इटाली को यूनिफाइड करने बट दे वर फेल. एंड आफ्टर दैट बर्तमान आम किए देखुचे ना कंजर्वेटिव ऑर्डर दैट इज द स्टेट पावर वी कैन से द मोनार्क बर्तमान अगेन 1848 पर जस्ट लाइक जर्मनी मेजर रोल प्ले कर इटाली रे इटाली को यूनिफाइड करिबारे. सो अगेन ए एग्जांपल भी इटाली यूनिफिकेशन एग्जांपल रू भी आम कहीपर हाउ द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज चेंज ए लॉट after 1848 and what was the situation of Europe prior to the 1848 I am already पूर्व discussed करिछे. So now let's see the unification of Italy. In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. So with this aim, with these positive aspects, they try to unify the Italy. जस्ट लाइक तो जर्मनी एठारे भी आम देखुचे कैवर जी कि चीफ मिनिस्टर थिले इटाली रो सी मेजर रोल प्ले करचंदी इटाली को यूनिफाई करिवारे. एंड लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ही वाज एन इटालियन एलिट एंड ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन. ओके, फ्रेंच थिला आम कहीपर यूरोप रो गोटे हाई सोसाइटीज मानकर लैंग्वेज. एंड चीफ मिनिस्टर कैवर बहुत फ्लुएंट थिले फ्रेंच रे एंड विथ दैट लैंग्वेज सी गोटे टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस फ्रांस सहित बा अन्य कंट्री सहित तैयारी करिबार बहुत सक्षम हेतिले. एंड कैवर ही थिले जी कि पूरा टोटल इंजीनियर करथिले बा टोटल प्लान करथिले कोन पई ना इटाली को यूनिफाई करिया पई. सो फाइनली सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859. ओके, एज यू कैन सी लोम्बार्डी एंड वेनेसिया ऊपर इटाली निजर अख्तियार बा निजर डोमिनेंस साब्यस्त करिबारे 1859 रे सक्षम ही पारथिला. एंड अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गियुसेपी गारिबाल्डी जॉइन द फ्रे. तो चीफ मिनिस्टर कैवर को बा में कहि परिबा मोनार्क को आउरी हेल्प करथिले को माने ना गियुसेपी गारिबाल्डी को अंडर रे जो गोटे ट्रूप गठन कराइतला और आर्म वॉलंटियर्स माने जो जॉइन करथिले गियुसेपी गारिबाल्डी को तांकर जो थिला आर्मी से माने भी बहुत हेल्प करथिले कैवर को बा में कहि परिबा इटालियन प्रिंसली हाउस को southern Italy को unify करिबारे. So as you can see here in 1860 they marched towards the South Italy, the kingdom of two Sicilies, and succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive the Spanish ruler. हम पढ़िथिले ना South part two Sicilies region रे को माने ना स्पेनिश रूलर बा में कहि पेरे स्पेन रो जो बर्बन किंग ए रीजन रे कोन करथला शासन करथला तो सेमानो को हटेबारे बहुत मेजर रोल प्ले करथले को माने ना गियुसेपी गारिबाल्डी एंड हिज आर्मी. So in this way finally in 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed the king of Italy. So in this way Italy unified on 1861. तो हमें a both example that is German unification and Italy unification both case रे हमें कौन देखिले. This is very important कि prior to the 1848 हमें जमती चैप्टर रे कौन डिस्कस करछे हमें चैप्टर डिस्कस करछे कि यूरोप रे नेशनलिज्म आइडिया इमर्ज केमती हितला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी. एंड आमे देखुचे जे अप टू 1848 यूरोप रे नेशनलिज्म आइडिया को इमर्ज करिवारे मेजर रोल प्ले करथले. दैट वाज फ्रॉम 1789 टू 1848 को माने ना लिबरल रिवोल्यूशनरीज. एंड आफ्टर 1848 हम वर्तमान देखुचे यूरोप रे जो नेशनलिज्म फीलिंग टी गाइडेड हितला को मानक द्वारा ना बाय द मोनार्क्स और वी कैन से बाय द कंजर्वेटिव ऑर्डर. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटाली. नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. नेक्स्ट क्लास रे पुनी थरा हम एक न्यू वीडियो सहित मिसिबा. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग.